Hello, guys. Welcome back to the Robo Vibes Fitness, Wellness, and Lifestyle Solutions. So, I'm your coach and host for today, Rahul Aryan. I am with psychic reader and healer, Samara. Hi guys, how are you? Thank you for joining in. So, guys, आज का जो सेशन होने वाला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का होने वाला है। साथ में फ्री टैरो कार्ड रीडिंग आपको मिलने वाली है, जो कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन सेशन के बाद आप अपने कोई भी कार्ड पुल कर सकते हैं। आपके लिए कार्ड पुल किया जाएगा। उससे पहले आपको फीड को शेयर करना होगा और साथ में आपको ये पेज को लाइक करना होगा अगर आपने लाइक नहीं किया है। हाय रिधिल, हे हाउ आर यू? हाय आमना। So good to see you, Amna. How are you? Hi, Ridil. यस आमना, हाउ आर यू? वी आर गुड। तो अभी मैं शेयर, थैंक यू, Lovely. थैंक यू सो मच। सो गाइज, अभी यहाँ पे अगस्त टैरो कार्ड रीडिंग का मैं लिंक भी डाल रहा हूँ आपको, जो कि डायरेक्टली आप अगर उसको क्लिक करेंगे तो वो सीधे यूट्यूब पे ओपन होने वाला है। सो यू कैन चेक इट ऑन आवर कमेंट बॉक्स। ठीक है, जस्ट मैंने अपडेट किया है। शेयर, थैंक यू रिधिल। Great. तो यहाँ पे आप अपने किसी भी सनसाइन, कोई भी सनसाइन जो है आपका, ऑलमोस्ट सभी सनसाइन की अपलोड हो चुकी हैं। यस, Ridil ka share hai, but there is not a share tag nahi aaya hai, Ridil ka. Amna, we got a share tag for you, so that's good. Okay, so carry on. Sorry. Yeah. फजीला अख्तर, हाय फजीला, होप यू आर वेल। सो गाइज, मैं अभी बता ही रहा था कि सभी सन साइंस का टैरो कार्ड रीडिंग बेसिक गाइडेंस, जनरल गाइडेंस आपको दे चुके हैं। तो वो आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका कि लिंक यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। तो अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जो कि एनर्जी हीलिंग, माइंडफुलनेस, रेकी, टैरो, इन चीजों से जुड़ी हुई है। साथ में वहां पे आपको फिटनेस टिप्स भी मिलती हैं, न्यूट्रिशन टिप्स भी मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो आप वहां जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और फजीला अख्तर, अगर आपने इस पेज को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिए। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? यस फजीला, वी आर गुड, Absolutely fine. एब्सोल्युटली वेल। And without spending any more time, we just asking people. This feed is not about meditation session. हम ऐसा कोई meditation नहीं करा रहे हैं. हम इसके बारे में सिर्फ बात करने वाले हैं. Okay? Because meditation actually takes time, and this is going to be a feed where we will give you that information like quick tips which is required to be attained in order to do this. So that is what we are here for today. यस, तो माइंडफुलनेस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, अगर किसी को मालूम है इससे जुड़ी हुई चीजें या माइंडफुलनेस क्या होता है तो प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। फजीला, आमना, रिधिल, एनीवन, ठीक है, कोई भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हम उसी चीज के बारे में बताने वाले हैं कि एक्चुअली लोगों के माइंड में माइंडफुलनेस को लेके होता क्या है, और माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक्चुअल में क्या, कैसे वर्क करती है, दोनों को किस तरह से मैच किया जा सकता है, और इनका सिंपल सा मीनिंग क्या है। राइट. तो वहां जाके हम ये सारी चीजें बताने वाले हैं। बस थोड़ा सा वेट और करना होगा आपको जी, और इस फीड को शेयर करते रहिए। सो लास्ट जो हमारा फीड हुआ था वो हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज से जुड़ा हुआ था, जो कि विटामिन सी के बारे में हुआ था। उससे पहले भी हमने फीड किया हुआ है विटामिन सी पे, और साथ में हमने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया हुआ है विटामिन सी के फायदे, नुकसान और मिथ जुड़े हुए हैं, जो भी बहुत सारे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखा है हमने। और रिगार्डिंग विटामिन सी, विटामिन सी, सो विटामिन सी के बारे में हमने अच्छा खासा आर्टिकल लिखा हुआ है वहां पे। तो उसके फायदे नुकसान वहां जाके आप रीड कर सकते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो यूट्यूब पे पूरी ही फीड है, अगर आप फेसबुक पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार हम विटामिन सी के ऊपर कर चुके हैं। राइट. ठीक है, तो गाइज आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और जो लास्ट फीड थी वो हेल्थ एंड हैप्पीनेस से जुड़ी हुई थी। ठीक है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस का पार्ट था, जो कि एक तरह की सीरीज चल रही है हमारी यूट्यूब पे। ठीक है, और उस हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज में हम बहुत सारे सेशन ऑलरेडी करा चुके हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। और आमना
के की डिमांड पे टैरो कार्ड रीडिंग भी की जा रही है. Yeah, Amna, you were asking when we are going to do tarot, so we are going to be doing tarot So here we in a are. while. While don't we start the session without wasting much of the time? So शुरू करते हैं. So guys, आप तो जैसे कि फाजिला अख्तर ने बताया, माइंडफुलनेस से मतलब है अटेंशन. ठीक है, Attention. ठीक है. अभी फिर यहाँ तो अटेंशन मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज माइंडफुलनेस, फजीला एक्चुअली बहुत सही बोल रही है. अटेंशन तो है, पर इसको थोड़ा सा इनहैंस वे में बताओ तो एक मेंटल स्टेट होती है जब आप फोकस करते हो, वहां पर आता है आपका अटेंशन. लेकिन अटेंशन किस चीज के लिए? इट इज फॉर योर अवेयरनेस, अपने प्रेजेंट मोमेंट के लिए. सो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड हो, अवेयर हो. सो दैट इज हाउ अटेंशन कम्स इनटू बीइंग. एंड ये जो चीजें हैं ये आपको बड़े कामली अपनी लाइफ में एक्नॉलेज करनी होती है, एक्सेप्ट करनी होती है अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपनी इवन योर बॉडीली सेंसेशन. एंड इट्स अ थेरेप्यूटिक टेक्निक एज वेल. ओके, सो माइंडफुलनेस जो है ये एक थेरेपी की तरह आप यूज करते हो. दैट इज व्हाट माइंडफुलनेस इज. हाय खुशबू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. वी आर गुड टू हैव यू हियर. तो माइंडफुलनेस की डेफिनेशन जो है बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में, एक लेमैन को जिस तरह से समझ आए उसी लैंग्वेज में हमने बताई. राइट. ठीक है, तो होप आप सभी को समझ में आई होगी. अगर कुछ कमेंट मतलब कर सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो. If you have any queries, you can ask. Yeah. और अगर माइंडफुलनेस से हट के हम मेडिटेशन नेम का एक वर्ड होता है उस पे जाएं तो वो क्या है? मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स. मेडिटेशन बड़े सारे तरीकों के होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स की तरह हम इसको यूज करते हैं और ये टेक्निक्स डिफाइंड होती हैं. इसमें सबसे पहले मैटर करता है आपका इंटेंशन. ओके, आपका एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस जो एक हाइटेंड होना चाहिए. तो सबसे पहले आप जब मेडिटेशन के बारे में सोचते हो तो आपको ये भी सोचना है कि आप कितने अवेयर हो. ओके, एंड ये जो आपका स्टेट ऑफ अवेयरनेस है आपकी इंटेंशन से मैच करना चाहिए. उसके लिए फोकस की जरूरत है. दैट मीन्स फोकस्ड अटेंशन, जिसके बारे में फजीला ने मेंशन किया था. सो मेडिटेशन इज एक्चुअली अ कॉन्शियसनेस और अ चेंजिंग टेक्निक, जिससे हमें ये पता चलता है कि साइकोलॉजिकली हमारे वेलबींग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है. सो लोग इसको करते हैं. एंड मैं कभी ये नहीं कहती कि ये आपको मेडिटेशन करनी ही करनी चाहिए. इट्स अप टू यू. पॉइंट इज आपको अपना आउटकम देखना है. क्या आप सेंस ऑफ अवेयरनेस विदाउट मेडिटेशन अगर आप अचीव कर सकते हो, सो मेडिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. बट अगर आपको लगता है आपके अंदर का जो पीस है, जो काम है, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं आप अगर करते हो, देन मेडिटेशन इज हेल्पफुल. दैट इज व्हाट मेडिटेशन हेल्प्स इन. देयर कमेंट्स जी, यहाँ पे हमारे पास फजीला का कमेंट है इसमें कि जहाँ मेंटली अटेंशन पे नहीं कर पा रहे तो कैसे कंसंट्रेट करें. कंसंट्रेट. सो इसी बात का मैंने जवाब दिया. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जवाब दे देती हूँ. इसी बारे में हम बात कर रहे थे. सो फजीला, व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट कि मेंटली अटेंशन पे करने के लिए, एक फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए ही मेडिटेशन की टेक्निक बनाई गई है. ये हमारे माइंड को चैनल करती है कि अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो हम फोकस करें. इट्स अ मेंटल ट्रेनिंग टूल. Actually, meditation जो है, it's a mental training tool. It helps you focus. So this is one of the benefits and one of the most important benefits, that it helps us in focusing. It helps us in calming ourselves. It helps us to get clear with our intentions, and the best part is it helps us to manifest the things that we want in our life into our physical reality. So it's an entire technique. That is the reason इसे therapy की तरह भी use करा जाता है. Ridhil has mentioned something. रिधिल अच्छा खासा कमेंट किया है. Mindfulness is the practice of purposely focusing your attention To the on present moment. the present Yes. moment. Yes. What is happening with you in the present moment? Like when I talked about mindfulness in the beginning, I talked about present moment. Awareness of the present moment. That is what is happening around you. And accepting it without judgment, that he is mentioned. Judgment, आप अपने आप को कहते हो कि this is something that I've done, this is wrong, this is right. This is beyond the wrong and right. ये बुद्धिज्म में
बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब इसको प्रैक्टिस किया जाता है, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है बुद्धिज्म एक ऐसी रिलीजन है जो हर रिलीजन से अडेप्ट कर लेती है. इट्स अ वेरी अडेप्टिव रिलीजन. इट एक्चुअली सपोर्ट्स ऑल द रिलीजन, बिकॉज मोर और लेस सारे रिलीजन्स सिर्फ यही सिखाते हैं, हाउ टू बी loving and how to be caring and how to be human, right? So ये सारे ह्यूमैनिटी के बेस पे रिलीजन बनाए गए कि लोगों का भला. That is why religion is just customs and tradition following a particular thought pattern followed by a particular community. So it's made by human beings. But उसका focus क्या होता है? Like Buddhism also is focused on these things. So Buddhism is more spiritual in nature rather than a religion. आप इसकी practices adopt करना चाहते हो नहीं चाहते हो ये आपके ऊपर है. और without judgment का meaning ये है when you are not judging something, when there is no right or wrong, that means you are enlightened, जिसे हम निर्वाणा कहते हैं. That is what it is. When you achieve that state of enlightenment, you become non-judgmental. You know everything is happening for the highest good of all, and you accept it the way it is in your life. So that is why. And he's also mentioned it is being examined scientifically and has been found to be a key element in stress reduction and overall happiness. ये scientific तो research इस पे चल ही रहा है. The whole practice of Reiki के पीछे ये principle है. Reiki is nothing but universal life force जो जान हमारे अंदर है. Our soul, the energy that we carry. Reiki is nothing but that life force जो हर एक में present होती है, हर एक में same होती है. हमारी vibrations up and down जाते हैं, but energy एक है. Source is the universe, the universal power, and that is how we are connected with the universe. And that is also healing के purpose से इसको use करा जाता है, right? So ultimately, it is all about healing. It is all about acceptance. It is all about awareness. And ultimate goal is to get yourself enlightened to a stage where you become a magnet to what you desire because you become enlightened, because you attain nirvana. So that is how it gives you the bliss. That is how it gives you the happiness. That is how it makes you non-judgmental, and that is the reason it is very powerful tool. एंड ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो विद योर फेथ, बिकॉज बिना बिलीव करे कोई चीज नहीं होती. एंड ह्यूमन माइंड जो हमारा है, देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड टू इट. तो हमारा जो एक मन जो होता है वो एक चीज को मानने के लिए हमेशा तैयार रहता है. दे ऑलवेज faith factor कि I want to believe into something, but there is this other mind who questions, राइट? उसे स्केप्टिसिज्म कहते हैं. इफ यू आर स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स, अगर आप डाउट्स हैं, आपको वरीज हैं और आपको ये लग रहा है आपको खुद में ही भरोसा नहीं है, अच्छा चलो मैं ये चीज करने वाला, इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल. इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इट हैपेंस. बट व्हेन यू हैव दिस डाउट्स, व्हेन यू हैव द वरीज, आप वही प्रोसेस जो आपका होने वाला है उसको लंबा कर देते हो, बिकॉज आपका बहुत थॉट प्रोसेस इधर उधर जाने लगता है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम अ चैनल. They are a channel. So it is about channeling your energy to get where you want. And that is the reason ये happiness और ये जो bliss है, इसमें meditation जो है एक tool है जिसे use करा जाता है. So that answers your question in entire detail, also taking care of the comment by Ridhil. Ridhil. Yes. Perfect. So next मैं पूछना चाहूंगा, तो meditation को mindfulness के साथ किस तरह से किया जा सकता है? मेडिटेशन विदाउट माइंडफुलनेस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब तक आपका मन शांत नहीं है, जब तक आप फोकस नहीं कर पा रहे, आप मेडिटेट नहीं कर सकते हो. ओके. एंड ये जो चीज है, देयर आर सर्टेन स्टेप्स. हमेशा यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फेसबुक के ऊपर गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, अलग अलग तरीके की मेडिटेशन होती है, इन विच यू आर मेडिटेटिंग टू द एंजल्स, यू आस्किंग द एंजल्स, यू डूइंग एंजल थेरेपी, तो वो एंजल थेरेपी मेडिटेशन में चली जाती है. देन यू आर टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म, उनकी एक अलग मेडिटेशन होती है. एक जनरल मेडिटेशन होती है जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं. यू कैन गो एंड चेक बाइनोरियल बीट्स करके. देयर इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दैट यू कैन हेल्प टू मेडिटेट. हर एक फ्रीक्वेंसी की अलग वैल्यू है, एंड दिस इज आल्सो कवर्ड साइंटिफिकली इन क्वांटम फिजिक्स. Okay, so you can pick the frequency for whichever, जैसे लव की एक फ्रीक्वेंसी है, एक हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी है, एक मेंटल स्ट्रेस हटाने की फ्रीक्वेंसी है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन play those things in your head and then listen to it and think about it. Also helps you visualize a lot of things, and visualization is a very powerful tool. Visualization का मतलब है अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करना जो अभी हुई नहीं, जिसे कहते हैं ना लोग
ड्रीम डे ड्रीमिंग करते हैं, फैंटेसीज इन दिस एंड दैट, वो भी आप सोचते हो, आपके माइंड में इमेज होती है। अगर आप सोचते हो कि आज मुझे कहीं जाना है, लेट्स से वी आर गोइंग टू ट्रैवल, सो इमीडिएटली आपके माइंड में ये आएगा, ओके द रोड, द सीन, ये सारा एक इमेज आपके माइंड में आता है। दिस इज नथिंग बट यू विजुअलाइजिंग दिस। सो सिमिलरली इवन इन रेकी देयर आर मेडिटेशन जिसके अंदर यूनिवर्सल लाइफ फोर्स के साथ मेडिटेट किया जाता है यूजिंग बोथ द हैंड्स, बिकॉज द हैंड्स आर द हीलिंग टूल्स इन रेकी। सो हैंड्स के साथ मेडिटेट किया जाता है, एंड दैट इज you're just sitting still, but you're imagining, the energy is going here and there in your hands, there is a change in light, colors का बहुत इस पे relevance होता है। So ये सारी चीजें बहुत ही अडेप्टिव हैं, एंड ये सब हमने पेज सिस्टम पे बनाई है। अगर आप सोचते हो कोई चीज आपको बेनिफिट करेगी और 100% आपका उसमें फेथ है और बिलीफ है, देन ओनली ये आपको बेनिफिट करेगी। इफ यू थिंक दैट ये आपको जरा सा भी डाउट है कि करेगी कि नहीं करेगी, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे, right? And it is all about the mind game. So ultimately it comes to mindfulness, ultimately it comes to being present in the present moment. अगर आप present moment पे रहोगे तो ना आप फ्यूचर का सोचोगे कि आउटकम क्या रहेगा, ना आप पास्ट से अफेक्टेड होगे कि पहले क्या हुआ था। both the things are important. So जब आप प्रेजेंट में होते हो तो आप ना पीछे सोचते हो ना आगे का सोचते हो, एंड जब आप ऐसा सोचोगे नहीं तब आपको नो डाउट्स नहीं आएंगे, वरीज नहीं होंगी, आपको डर नहीं लगेगा, एंजाइटी नहीं होगी, एंगर नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, बिकॉज यू नीड टू नो दिस प्रेजेंट मोमेंट इज योर लाइफ राइट नाउ। जिसे कहते हैं ना, टाइम इज इन द नाउ, सो दिस इज द नाउ, सो यू लिव इन द नाउ। आगे आपने देखा नहीं है, पहले जा चुका है, there is no point, you can't go back and change the past. So what happened has happened, take the learning, move on and stay in the now. Plan for the future but don't overthink it. Future में रहने के लिए जरूरत नहीं है, फ्यूचर का विजुअलाइज करने की जरूरत है, just to know which path you have to walk on, but रहना प्रेजेंट में ही है। And that is how when you are mindful, you are always in the present, and meditation is one of the techniques to get your focus back. So you can use this technique, and since you asked this thing, I want to also mention a link over here जो कि हमने अभी meditation steps डाले हैं। So if anyone is interested in knowing mindful meditation steps, this article describes the 6-way steps which is available on our Instagram. So if you're interested to know how to do it, it's a very easy article. If you have any questions, आप article पे जाके comment कर सकते हैं, we'll answer those questions for you. If you want to know how to do that, you can go and watch the steps. So the article is there for you. Next question. right क्वेश्चन काफी चीजें क्लियर करी, मुझे भी नहीं पता। 11. angels around us. Yes. So next उसके क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो मतलब इससे क्या हीलिंग हो सकती है? माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन से हीलिंग की जा सकती है? अभी मैंने जैसे रेकी का भी बताया, हीलिंग के लिए यूज होता है, राइट? हीलिंग का मतलब ये है कि आपको चोट लगी है, आपको उस पर दवाई लगानी है, फिर वो अपना बॉडी अपना टाइम लेके हील होती है, तो आपकी चोट ठीक हो जाती है, राइट? सिमिलरली कुछ चोटें ऐसी होती है जो दिखती नहीं, राइट? सो हाउ वुड यू अप्लाई, how would you treat that? So when you are angry, when someone has hurt you, okay, when you have challenges, when you have revengeful thoughts, when you have negative thoughts about hurting other people, या there are people जो लोगों को देख के उनकी blessings को देख के खुश नहीं होते हैं, okay? So when then they send you the evil eye and bad energies and all that. So ये सारी चीजें जो हैं जब आपकी लाइफ में होती है, then you understand that these are the things which people are sending towards you, right? How do you protect yourself by not getting affected by that, right? The more you indulge in those kind of talks, the more you're going to get affected. So that stops your healing, that actually corrupts your mind, because your mind is more focused on what the other person is doing. Mind is more focused on what negative you have experienced, राइट? सो ये जो आपको ट्रीटमेंट करना है, अगर आपको इस तरह का हर्ट अंदर है, ये किसी तरह की कोई भी नेगेटिव, पीपल गेट एंग्शियस एंड दे गेट इनटू अ डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड, सैड हो जाते हैं, इस तरह की अगर आपके साथ चीजें होती है, दैट मींस यू नीड हीलिंग, राइट? और आपकी हीलिंग हो रही है, इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स ये है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट हैव हैपेंड विद यू, माइंड वही शांत हो जाएगा आपका। लाइक आपको 100 में से 50 नंबर आए, नहीं ना मेरे 50 नंबर हो ही नहीं सकते, बट देयर वुड बी अ टाइम व्हेन यू विल एक्सेप्ट दैट 50, राइट? दैट या 50 ही है,
right? This is what I got. This is the outcome. Now I have to accept it. The easier it will be, the easier it will be for you if you accept it as soon as you can. Everybody has, their own time and pace of acceptance. Some people take a lot of time to, heal from the hurt that has been caused. Some people recover in a few days. कुछ लोग तो सालों सालों ही रिकवर नहीं होते, बिकॉज उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है because of the past event, वो past से बाहर ही नहीं आते. So when you're not out of the past and you're not in the present, which means your focus is on something which you can't change, something which is out of your control. So how do you gain control over here? Healing भी तब होगी जब आपको control होगा, right? So when you want to heal, you need to control this, because for that you need to get the medication, right? Medicine अगर आप लेने जाओगे तो आपको ultimately, you need to go to a chemist to get the medicine, right? पर अगर आप चोट देख देख के सोचते ये रहोगे मुझे चोट कैसे लगी थी, तब तक चोट तो कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी, बिकॉज हम उस पर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं हम उसका. राइट, सॉल्यूशन की तरफ जाएं. Yes, ठीक है, देखा है प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन की तरफ. absolutely. So we need to look at the solutions. We need to look at what has happened. अब चोट लग गई, just accept it. This is what has happened, right? अब उसमें आपको ये देखना है कि क्या आपके कंट्रोल में क्या है. किसी और ने अगर कुछ करा है, it's their karma, it's out of your control. एंड ये सोचना कि उनके साथ क्या होगा कि नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ योर कंट्रोल. एंड अगर आप वहां फोकस कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, you're more bothered about what's happening with the other person. You're more bothered about the revenge, how karma is going to, bite them. But you need to take the focus off of them. Whatever they have done, it is for them and it is their responsibility. It is not something that you have to worry about, and it is not your problem. How they treated you or what happened in your life which made you कम डाउन. तो अगर आप किसी चीज से लाइफ में गिरे हो, तो स्ट्रेंथ भी आपको अंदर से अपने खुद ही डालनी है. कोई आके आपको स्ट्रेंथ नहीं दे सकता. लोग आके बातें करके चले जाएंगे, आप लोगों की बातों में लगे रहो. बट वेयर इज योर वेयर इज योर अटेंशन, वेयर इज योर फोकस? द फोकस नीड्स टू बी ऑन यू, what you are thinking, what you want, what you think you deserve in life, and then you take a call for yourself that I accept this as a challenge. ये चोट मुझे लगी है, लेकिन अब मुझे इसको हील करना है. And now I have to heal it. Now what can I do to heal it? तो उसका पेन तो आपको सहन करना पड़ेगा ना. बिल्कुल सही. So you can't just do away with the pain. तो अगर आप ये सोचोगे अच्छा मुझे ये हर्ट हुआ, जब तक मैं उस हर्ट से डील नहीं करूंगा, तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? The hurt and the pain has to be there, right? So you need to make sure that you accept the pain that comes along with it, because it's your life's journey. अगर सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता रहेगा, आप उससे भी बोर हो जाओगे. When there is no up and down in your life, you'll get bored with that also. Imagine everything is worked out for you at every given time. There is no excitement. Things become boring. You become a rock. There is no feeling. So being blissful doesn't mean that there is no feeling. लोग बड़ा इसको confuse भी करते हैं. But when you talk about being blissful, you need to also think about the fact that blissful has its own ups and downs. आपको चीजें अच्छी भी लगेंगी, बुरी भी लगेंगी, बट इट इज पार्ट ऑफ योर सोल्स जर्नी. आपको भगवान ने बनाया है दोनों चीजें फील करने के लिए, गुड भी और बैड भी. सो यू विल फील बोथ द थिंग्स. बट द पॉइंट इज, अच्छी चीज होती है हम फटाफट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि हमें लगता है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल हमारा वाइब्रेशन हाई हो जाता है, एंड देन वी आर ऑन ऑन क्लाउड नाइन. बट व्हेन द ऑपोजिट थिंग्स हैपन, देन हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब हमें अपने आप को उठाना है. वर्क तो वहां पर है ना, एफर्ट तो वहां है. तो उसका आउटकम जब आपका आएगा, उसकी खुशी के लिए, फॉलोइंग द सेम पैटर्न एंड टू गेट अगेन टू दैट लेवल, एफर्ट तो आपको करना है. So till the time you won't treat it, till the time you won't accept it, till the time you would not face your pain, your fears, your doubts and worries, till the time that doesn't happen, then you cannot be positive. लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव का मतलब है नेगेटिव को हटा दो. नहीं, you have to face your negatives so that to make sure that all the guilt, all the all the negativities is dealt with once and for all, and then you push it back and move it out of your life. जितना जीना है, जितना रोना आ रहा है, रो लो अभी. लेकिन once you stop, then you stop and then you move on, and then you come back to your present, because the present has your challenge ki haan, this is what I have and this is what I accept in my life, and this is how I have to move forward. That is what you need to do. So when you move forward, then you look at different things that can be done.
Life doesn't stop. Life doesn't stop for anyone. So this is what I have to say. And इसीलिए एक और लिंक भी यहाँ पर हम डाल रहे हैं, which is a link about healing. कि हीलिंग का सबसे बड़ा साइन एक्सेप्टेंस होता है, ये हमने पहले भी बात करी हुई है. So there is this article on Instagram which is easy to find. You can go ahead and read this article as well. If you have any questions, you can write the questions over there. You'll get your answers. And if you have any questions, you can ask right now before we start with the tarot feed. So who is in for tarot? We are going to do very limited And a tarot. lovely comment is here. Thanks for the motivation. Thank you so much, Fazila. Get your heart you as well. So अगर किसी का कोई टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है. Now you can. उससे पहले आपको फीड को शेयर करना होगा. जब तक शेयरर बैज आपके नेम के ऊपर नहीं आता है, उससे पहले टैरो कार्ड रीडिंग नहीं दी जाएगी. आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है, ठीक है. और अगर आपने पेज को लाइक नहीं किया, द रोबो वाइब्स पेज को, तो सीधे पेज को लाइक करना है, शेयर करना है, देन अपना क्वेश्चन पूछना है. और एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, काफी देर के लिए हम टैरो के लिए यहाँ पे नहीं है लाइव, ठीक है. So whoever is नहीं, date of birth की need नहीं है, सिर्फ आप अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज. Yeah, I read energies. I don't need date of birth. Actually, if you provide it to me, that's good, but it's not really needed. She is not only tarot card reader. She is psychic. Yeah. I'm a psychic reader. I read energies. So actually, tarot is one of the tools. Like meditation एक tool है mindfulness के लिए. Tarot is one of the tools. मुझे डाउट ही फजिला अख्तर का कमेंट है. मुझे डाउट ही एहसान मेरी सारी इन्फो को देते हैं. क्या बात है मेरे बारे में सारी थिंकिंग. Okay, very descriptive question. And in this feed, let me see how much I can answer, because I'm going to be pulling one card for you, Fazila. Detailed reading ke liye you can contact me. Amna will come to you after that. Please check if there are any more comments. So, oh, now I see the stickers. I should show you. Okay. All right. Three of Pentacles, Fazila. मैं इस कार्ड से इतना बता सकती हूँ आपको कि आपकी इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर यू. कुछ स्कीम चल रहा है. सो यू नो माय एडवाइस इज टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अराउंड दिस. एंड जहाँ तक इसी कार्ड के बेस पे आपने पूछा कि थिंकिंग क्या है, आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव ओवर हियर. Okay, but it is not really that positive as well. You need to get more information about this, so that calls for a detailed reading. But doubt हटा दो ये अपना कि आपकी information आगे pass हो रही है. Actually pass हो रही है. The answer is yes to that. Hi Naman, good to see you after a long time. Love card for Amna. Amna. Yes. कोई advice आपको क्या करना चाहिए? ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए फजीला, एंड थोड़ा सा ऑब्जर्व ज्यादा करिए, बात कम करिए. आप थोड़ा सा इसमें टेस्टिंग भी कर सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो लाइफ कोचिंग आ जाता, बट यू कैन टेस्ट अ लिटिल बिट. अभी जो कार्ड पुल किया जा रहा है आमना अख्तर के लिए है. आमना, आर यू देयर? Prayer and finance ahead for Naman after that. Card, please. Thank you so much. Thank you so much, Fazila. She's put the stars, right? You're most welcome. Yeah, she's put the stars. Stars are my favorite emoji. Yes, she's there. Amna. Okay, what was the question? Love card, please. Okay. General reading is coming with this page of rods over here. You're going to hear from someone regarding some ideas, something which is not related to love, but that could be a good news for your love life. So कोई email, कोई phone call, कोई ऐसी चीज आपके पास बहुत अच्छी न्यूज लेके आने वाली है. So ये मैं आपको बता सकती हूँ. आप 1111 seeing a lot of these days. Late आयो, अभी हमने feed पे भी बोला, हमने feed पे भी बोला है. Most welcome, Amna. Lots of God bless you. Very talented both of you. Thank you so much, Fazila. So sweet of you. Okay.
नमन के लिए 1111 जब दिखता है नमन, मैनिफेस्टेशन का सबसे आई वुड एक्चुअली से सेकंड नंबर पे बहुत अच्छा नंबर होता है. द फर्स्ट बीइंग 111. व्हेन यू सी 3 times, उस टाइम आप जो भी सोच रहे हो दैट बिकम्स ट्रू. 1111 विश करने के लिए बहुत अच्छा है. So, अगर जब देखते हो और माइंड में कुछ विश आती है कि चलो बिकम प्रेजेंट में आके थोड़ा सा अपने लिए विश कर लो, एंड दैट कम्स ट्रू. आई हैव ट्राइड इट नंबर ऑफ टाइम्स, मेरा तो हो जाता है. सो even if I'm not active on comments, I'm listening to you guys on short window. जहाँ वहाँ टाइप नहीं कर सकते बस. That's okay, Namna. Thank you so much, dear. I know you are. So Naman का card for career and finance ahead. Naman, hermit mode, hermit card. Uh, it's a very contemplating energy. It's not positive or negative. It looks like to me that you will get in a mode where you will be thinking a lot about what you have to do with your finance and career going forward. तो एक ऐसा वक्त है अभी आपका जहाँ पर आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो. अभी आपको क्लैरिटी उस तरह से मिल नहीं रही है कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए कि नहीं. एंड आई विल जस्ट से दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिसाइड ऑन समथिंग न्यू. सो कोई भी नया एक्शन या नया स्टेप अपने करियर के टुवर्ड्स डालें. इस एनर्जी को पास होने दें, एंड वंस दिस एनर्जी सेटल्स अपने आप आपका माइंड क्लियर हो जाएगा फॉर समथिंग अहेड. So this is not a very good time to get a reading on your career and finance. This energy is not good, which is going right now. Good to make new decisions. ये एनर्जी नॉर्मली ऐसी भी होती है जहाँ पर आपको थोड़ा सा लोनली भी फील हो सकता है, आपको लगता है कि आप लोगों से कट रहे हो. एंड ये स्पिरिट का आपको एक लेसन है लाइफ में, वेयर यू नीड टू मेक श्योर दैट आप भीड़ में भी अकेले अगर फील करते हो, इफ यू फील समथिंग लाइक दैट, it is actually a blessing. Take this time to think about your life and make your plans. This is time for planning, not execution. So that is what I would like to say. Naman, that's for Naman. Any more questions we have? No, we don't have any question. Okay, let's end this feed then. क्योंकि मैं आज सुबह से रीडिंग्स दे दे के वैसे ही परेशान हो गई, so I'm glad there are no questions. So guys, thank you so much for coming here. Yeah. और ऐसे ही आते रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन होता है जरूरी नहीं है कमेंट में ही आप पूछें. आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर व्हाट्सएप पे. नंबर दिया हुआ है जो कि समारा का नहीं है, मेरा नहीं है, ऋतु का है, जो कि दरोगा वाइब्स की मैनेजर हैं. वो संभालती हैं ये सारे काम. ठीक है, वो हम तक कमेंट पहुंच जाएगा आपका कमेंट. या और अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस, रीडिंग या और कोई सर्विस में इंटरेस्टेड हैं आप, उसके चार्जेस जानना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हैं. व्हाट्सएप सबसे नंबर best में way है. कैटलॉग में हमने एक्चुअली सारी चीजें डाल डाली दी हुई हैं, हैं. so that people can have access to it. So you can go ahead and look at the catalog on Ritu's number, and And do not call over there. yeah, that number is not open for calls. एक ऋतु के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगी. आई थिंक हमने शायद कभी फील्ड में मेंशन नहीं किया है about her. I mean, in detail. We employed her in the lockdown last year. She's been a very supportive part of our team. She has a speech defect, and even though she can't speak clearly and she cannot handle the client, she's a client servicing manager because um, you know उनका रिटन स्किल्स और उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा, बड़ा क्लियर लिखती हैं. लेकिन अभी जिस तरह से जॉब्स का माहौल चल रहा है, शी वाज नॉट गेटिंग अ जॉब एंड शी हैड टू फीड अ फैमिली. एंड बड़े टाइम से वो जुड़ी रहती है, मतलब मेरे आईडी पे भी थोड़ा थोड़ा वो कुछ करती रहती है. सो शी इज मेंटेनिंग द पेजेस. आई इफ आई लुक एट हर फ्रॉम डे वन, द moment she started Rover Vibes, the kind of articles she was posting, now the kind of articles she's posting, and now how the page is looking like, she's doing a lot of efforts. तो जितना उससे होता है वो बेचारी करती है. वो कॉल्स इसलिए नहीं उठाती है बिकॉज वो बोल नहीं सकती है. सो यू कैन सेंड हर वॉइस मैसेजेस एंड शी विल रिस्पॉन्ड टू यू. सो अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी शी विल डिस्कनेक्ट द कॉल. सो वी लेट हर डू दैट. वी डोंट माइंड दैट बिकॉज इफ somebody is really interested, she will always send you a message that you called us and all that. But if you're really interested to reach out to us, we don't mind her disconnecting the call, because you know we are where we are because of all the efforts that she's put so far. Because हम अपने में busy होते हैं, back end वो सारा बेचारा अकेली देखती है. And talking to her हमें तो habit हो गई है, but if somebody calls on the number, so हम उसको हटाना भी नहीं चाहते. So please support her as well. And
just reach out or ping to her, and you can look at the catalog that she's built, everything. So अब कुछ बड़ा अच्छे से उसने सब कुछ handle करा है. So blessings to her. You never mentioned her. नाम नाम मुझे भी करता हूँ उससे मुझे मिलना है. बिल्कुल बिल्कुल किसी दिन जरूर. My. Again, so thank you so much guys, and Take see care, you guys. on Good night. next Good night, week. Amna. Good night, Naman. Thank you so much for coming, and we'll see you next week with calcium. 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 Right. Yeah.